Do Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment. Oh, शुरू I don't know. शुरू हो गया भाई शो शुरू हो गया. We did that genuinely. Yeah, we did that. That was natural. Yeah. कुदरती reaction था ये आप लोगों के लिए. Kudrat is cheering from inside. Yes. Anyhow, welcome Something to else our show. cheering from inside, Welcome to a special edition of Do Mastane. आज हम मिस्टर बिरयानी और मिस्टर कढ़ाई जो हैं आपको 2023 का एक वो देंगे Recap करेंगे. टोपी फिर से पहनाएंगे हम. Recap. It is a journey back to the past of this particular episode. But before we do that, we have to thank Awaz Entertainment, the team, the management, producers, and our sponsor, Oklu. And maintenance staff down the hall. Yeah, those guys too. Yeah, they've been working really hard. Yeah, the painters who are painting the lines for the parking positions downstairs in the parking lot. And the guys cleaning the toilets after I use them. Yes. That man needs a raise. That man does need a raise and a bonus, Yeah. especially after today. बहरहाल, आज हम बात करेंगे 2023. What a year it has been. It has been. What a year. क्या साल रहा है ये? Air. हम air बहुत कहते हैं हम यार. क्या air रहा है? क्या air है था यार, जबरदस्त air. मैं आज सोच रहा था. हाँ. मैं सोचता तुम सोचते हो? बहुत सोचता हूँ. बहुत सोचते हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो. मैं इतना सोच रहा था कि मैं अपने कपड़े भी सही से पहन के नहीं आया. हाँ, ये देखो तुम मेरी तरह लग रहे हो. हाँ. Yeah, we are both looking the bummish today. Yes, I am looking very bummish. Yes, but we both carry it really well. We're good Carriers? bummers. Bummers? We're good bummer carriers. Bummer carriers. Yeah. बहरहाल आज हमने सोचा कि हम स्पेशल एडिशन में दो मस्ताने के आप लोगों को 2023 की कुछ हाइलाइट्स, कुछ झलकियां सुनाएंगे. Yeah. कि क्या हुआ इस साल में क्या? What are the big stories? बहुत कुछ हुआ यार. One of the bigger ones is obviously the one that we cannot talk about. क्योंकि वो जो इतनी बड़ी है. हाँ. इतनी बड़ी कि वो मतलब इतनी बड़ी है. I want you to say something. हाँ, please. इनके ऊपर कैमरा कर दे. इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर कोई तंजिया या कुछ ऐसी चीज जो ना वो करने की जरूरत भी नहीं है. हाँ, इतनी बड़ी है. क्योंकि ये it's already self-explanatory. It is. I think you guys know what we're talking about. It's funny though. Do you know what I'm talking about? Yeah. No, but it's just, I know I don't want to say anything. Okay. देखिए जंगें और जंग और अमन और झगड़े और लड़ाई ये जिंदगी का हिस्सा है. बेशक. कभी मियां बीवी लड़ते हैं. कभी दो बच्चे आपस में. ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है तो. I mean that's a lot more खतरनाक than any kind of atomy jung or anything like that. Definitely. At least for when countries fight, you can have slogans like free this country or free that country. हालांकि कोई फ्री मिल रही है वो कोई खरीद नहीं रहा उसको. ये कोई ले ही नहीं रहा. Anyways, but if when मियां बीवी fight, you cannot free anyone, especially the मियां. क्यों मियां? सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो मियां. So that was one of the bigger stories. What else did we have this year, man? पाकिस्तान में क्या हुआ? ये बताइए. यार ये जो पाकिस्तान में मैं क्या कहूँ यार, this whole season that we've been torturing ourselves through. अपने जेल में बैठे हैं अपने आराम से अपने खान साहब. Yeah, that story in itself is the biggest one. कि यार उनकी सबसे बड़ी परेशानी पता क्या है? परेशानी क्या है? उनकी परेशानी ये है कि उनकी जो 24 किलोग्राम नहीं 14 किलोग्राम के डंबल जो है ना उनको मिल नहीं रहे हैं. ओहो, ये तो मसला हो जाएगा. सलमान खान से क्यों नहीं बात करते हो? यार वो he should be talking to Salman Khan. You should just call him up. He was complaining the other day that but his dumbbells, at least यार dumbbells तो दे दो यार मुझे. हाँ, डंबल तो दे दो यार. इतना भी डम नहीं होना चाहिए लोगों को. डम नहीं. That kind of tells you what kind of an attitude and what kind of relaxation Mr. Khan Saab is having. That's the way he's been throughout our entire season. He's been like that the entire season. Just hanging out, lifting weights. Maybe he's having a good time there. हालांकि लोग तो क्या? That's what I'm hinting at, man. मैं तो कहता हूँ भाई इस कंट्री को फ्री मत करो. Free this, free that. Forget that. Free Imran Khan. Free Imran Khan? हाँ, उसको छोड़ दो. But I don't think he wants to at this point. Nah. Just give him his dumbbells. Come on. Just give him his dumbbells. अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए. Forget about being a prime minister. Forget about Saf and Safash. No. क्या होता है? Saf and what? कोई साफ नहीं है. सब गंदे हैं. Saf election.
Clean and Clear. clean. Clean and- No, free and clear. Free and clean. Again, No. free? Or, Fuck, I don't know, man. Ah. Did I just say the F word? Listen, forget about all those things. Just get them as dumbbells. yes. Yes. So that's And the make sure second they're thing. 14 kgs. 14 25 kg, 25 pounds. What is it? No, 25? 30 pounds. 30 pounds, right? No, Something no. like that. 14 kgs is about 30 pounds, I think. I think we're bang on. We're bang on with that, right? उसके Bang. अलावा इस साल क्या हुआ? जल्दी से बताइए, वक्त नहीं यार है. ये जो Oh, yeah, the World Cup. World Cup. लेकिन दो World Cups. What a magnificent World Cup it was. Magnificent. Absolutely magnificent. हुआ क्या? यार ये लेकिन अब यार ये जो हमारा जो मैक्स जो है ना इसने हाँ. अपनी वो मैक्सिनियत नहीं दिखाई हाँ. in the final. That was the rest of the team that but did it. he did his job. But he and, did what he had to do to he get there. shifted the momentum almost maybe a little past the halfway mark. Lekin that changed everything. And completely, I mean, it was not just the benchmark or the highlight of this particular tournament. I Yeah. think it was the highlight It of was. any World Cup tournament in history. It was a huge momentum shift. और मैं तो ये कहूँगा कि उसके बाद, from that point onwards, Australia would have beaten anyone, even if they were playing against Yeah. themselves. They would have beaten them. They would have beaten themselves. No, I mean, we can talk about the finals in '75. You can talk about the finals in '83. Those powerful West Indian teams. Abdullah, I don't think it mattered. I don't think there wasn't anything as outstanding, majestic like that offensive performance or presentation by Max. I've never seen anything like that. And apparently he repeated that performance recently in just a side T20 game. Yeah. But once he gets going, वो मुझे लगता है वो भूल जाता है यार. Max हो जाता है. Max हो जाता है. He maxes out. किसी और उसमें चला जाता है. He maxes all his powers out. Maxes it right out. Right there at the end. He's maxed out at the end. तो उसको पाकिस्तान टीम में किस तरह डाला जाए? ये है हमारे लिए सोचने वाली बात. देखो वो लगता तो है थोड़ा उसको थोड़ा टैन वैन कर दें. बीवी तो वैसी उसकी इंडियन है. Is she really? She's Indian. She a pretty lady? I hope so. For his case. Yeah, but he's a hairy little monster, isn't he? Yeah, that's why he looks Pathan. He does look Pathan. He does look Pathan. मुझे तो लगता है वो पठान ही है. वो पाकिस्तान के लिए यार. Max Khan. That's why he went nuts against Afghanistan. Yeah. He couldn't take it. You just, He said, बस यार मैं अब खेलूंगा. मैं हर बॉल को बार निकालूंगा मैं. Anyways, folks, we're going to take a little break. But after the break, we're going to tell you the biggest story of 2023. जाइएगा मत, देखते रहिए. Oh man, and it's something very personal to us. Yes. It's the most beautiful feeling in the world. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो. वेलकम बैक टू फिल्मी सफ़र. आज हम फिल्मी सफ़र में लिटरली एक सफ़र करके थोड़ा सा पीछे जाएंगे. Almost 20 से ज़्यादा. I think 30 years we're going to go back to 1994 with Andaz Apna Apna. हाँ जी, सलमान खान, आमिर खान, इंस्पेक्टर गोगो, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और बेइंतहा कैरेक्टर्स इस फिल्म में घुसे हुए थे. ये फिल्म वो थी उस टाइम की, वो फिल्म है जो आज तक एक ऑडियंस लेकर आती है. हमारा जो एक शो भी है, दो मस्ताने, एक गाना बड़ा सा ऑब्वियसली में फेमस हुआ था, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने. और ये कॉन्सेप्ट 90s में बहुत बड़ा था, जब लोग छोड़ के अपना घर, दे वांटेड टू गो अचीव एंड डू समथिंग. बट राजकुमार संतोषी ने इसको किस तरीके एक कॉमिक सेंस में और एक नेचुरल वे में फिल्म को शूट किया. अब ये फिल्म जिन्होंने देखी नहीं है, प्लीज़ हमारे चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट के ही लाइनअप में भी है, आप कभी भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं. और मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का कंपैरिजन आज की इस साल की फिल्में जो ब्लॉकबस्टर्स रही हैं उसके साथ हो. हमारी ऑडियंस का जो एक चेंज आया है, जो एक्सेप्टेंस है या माइंडसेट है, वो आज कहाँ है. अंदाज अपना अपना और 90s के टाइम की आपकी फिल्में रोमांटिक थी, कॉमेडीज थी, फैमिली ओरिएंटेड थी और नेचुरल थी. ना आपके अंदर कोई ग्रीन स्क्रीन था, ना कोई CG इफेक्ट्स थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना उसमें आपके मल्टीपल कैमराज. और फिल्मिंग जिस तरह होती थी, वाज डन ऑन दोज रील्स ऑन अ फिल्म, जहाँ पे वो एक बड़े से कैमरे के अंदर रील डालते हैं और रील
कट करके चेंज होती है, रील चेंज करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता था, प्रोडक्शन की कॉस्ट वैल्यू भी रील के हिसाब से जितनी आप फिल्मिंग करोगे कॉस्ट उस तरीके से बढ़ती थी। अब आजकल ये डिजिटल का ज़माना है, जितना आप फिल्म करना चाहते हो, आप जितनी रीटेक्स लेना चाहते हो आप लो, जितना आप अपने आप को फिल्म करके एक्सपैंड करके उसको काट के छोटा बनाना चाहते हो आप कर सकते हो। उस टाइम पे बहुत सेलेक्टिव तरीके से और एक बड़े कैलकुलेटेड तरीके से फिल्म बनानी पड़ती थी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस से, अंदाज़ अपना अपना जिन्होंने देखी है डेफिनेटली उनकी फीडबैक तो बड़ी जल्दी आ जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी मैं चाहता हूँ कि वो देखें इस फिल्म के आज की जो जनरेशन श्रद्धा कपूर को जानती है, वेरी फेमस, डन अ लॉट ऑफ ग्रेट मूवीज इन द रिसेंट। उनके फादर शक्ति कपूर इसमें एक कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया था, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। So in that comic relief and that comedy that they displayed with multiple characters and having one camera that they had to utilize, it was so difficult compared to how they film today. मैंने पिछली बार एक उस फिल्म जो आई थी रिसेंटली गणपत के ऊपर रिव्यू दिया था और जो मैंने बताया था कि बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म है, जो अमेरिकन फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म जैसे मैड मैक्स थी उसके तरीके से बनाई गई थी। एंड इट वाज प्रीटी मच आई थिंक द होल or at least 80-85% of the film must have been on green screen and on special effects. पर ये फिल्में जो 90s की थी, स्पेशली लाइक अंदाज अपना अपना, स्पेशल इफेक्ट्स में नहीं थे, इनमें एक्टर के इफेक्ट्स थे, इनमें सराउंडिंग के इफेक्ट्स थे, इसमें म्यूजिक का इफेक्ट था, which made these films successful. But obviously the value of numbers in terms of investment on return, I think in the 90s was definitely higher compared to today. अब आप देखिए फॉर एग्जांपल गणपत भी हो गई, और आज इस साल की जो एक फैमिली ड्रामा जो करण जौहर जो अपना ऑब्वियसली हिज full, larger than life about loving your family, loving your parents and loving each other and that whole concept he brought up with Rocky Aur Rani. अब रॉकी और रानी मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा, it didn't do as well as the films in the previous years he had produced. Even from obviously Kabhi Khushi Kabhi Gham as one of the staple points of his career. But मैं देख रहा हूँ कि I don't think it's so much about the filmmaker in terms of how they're displaying their films. I think it's about the audience in terms of what they are watching. आप क्या देख रहे हो, आपको क्या पसंद आ रहा है? Jawan is still running in theaters and doing very well. Tiger 3 अभी recently release हुई थी and it has broken box office records in a lot of places and it got a lot of appreciation. तो अंदाज अपना अपना और टाइगर 3, जवान, उस टाइप की फिल्में मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि what do you feel the difference is in the films of that time and the films that are coming out today. आप आगे जाके किस तरह की फिल्में देखना चाहेंगे? आपको अंदाज अपना अपना नेचुरली मेड फिल्म्स दोबारा स्क्रीन पे वो मैजिक देखना है, उसको महसूस करना है, या are you happy and content and you do like the fact that they're creating everything out of nothing? कि ग्रीन स्क्रीन पे आदमी दिखा रहा है कि वो प्लेन से कूद रहा है, ट्रेन के नीचे जा रहा है, पहाड़ से कूद के सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। पर अब अंदाज अपना अपना या उस टाइम की फिल्में आप देखेंगे, आई डोंट थिंक you'll be able to see those kind of scenes, or if you will, you'll see actually someone doing something that is actually real. पहाड़ से कूद रहा है, मोटरसाइकिल से नाले के अंदर गिर रहा है, या कुछ भी, I mean anything that's been happening which is more action oriented and based, it was done all naturally. But जरूर अगर आपने देखी नहीं है, please go check out अंदाज अपना अपना and let me know. I'd really want you to let Awaz Entertainment know, and of course Filmi Safar, that what you think. How do you feel the differences in between the movies of that time, of the 90s per se, films like Andaz Apna Apna, and films that came out in 2023? आपको ऑडियंस में और अपने टेस्ट में, क्योंकि मैं भी उस जनरेशन का हूँ, जब मैं स्कूल में था 90s में और अंदाज अपना अपना तब आई थी, तो मेरा बेटा जो है अब obviously university pass kar chuka hai and all, and he's a working guy, but he's in his 20s, so I wanted to ask him that what is your viewpoint? He loves the movie, he loved Andaz Apna Apna, and after he watched it, he was like, he found that it was actually better than the movies that are being released today with all this amazing technology. So that was one perspective I got, क्योंकि वो घर का perspective था तो आसानी से मिल गया। पर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अपनी ऑडियंस से, कि आपको क्या लगता है। तो जरूर सॉरी फॉर माय लिटिल फंबल, होता है, कैमरे के सामने होता है, बट देखिए डिजिटल है ना, तो हम आराम से रीटेक्स ले सकते हैं, फिल्म नहीं है। बट एनीवेज, अगर आपने देखी ना हो, जरूर जाके देखिए अंदाज अपना अपना आवाज़ एंटरटेनमेंट की लाइनअप में है, हमारे यूट्यूब चैनल में भी है, हमारे बॉक्स में जाइए, वहाँ भी देखिए, वहाँ पे भी है। एंड लेट अस नो योर फीडबैक इन टर्म्स ऑफ हाउ यू फील द डिफरेंसेस फ्रॉम द 1990s or the 90s movies to the 2023s and the 2000s that we're living in. Look forward to hearing from you. Thank you so much for joining me again on Filmi Safar. As always, it's a fantastic and a fabulous pleasure to be in front of you. अपनी तरफ से ओक्लू एंटरटेनमेंट, आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से, ओक्लू हमारा स्पॉन्सर है, ओक्लू दुबई से हमारा स्पॉन्सर, और बड़ी कमाल की चीज़ें करते हैं। उनकी तरफ से, आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से, दो मस्ताने की तरफ से, और अपनी तरफ से
Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Kem Cho, and thank you so much for joining me again. Look forward to seeing you again very soon. Thank you. It's the most beautiful feeling in the world. The Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। हिना सुमरानी हाजिर है अपने सेगमेंट हीलिंग विद हिना के साथ। हीलिंग के कई रूप हैं और कई तरह से लोगों ने हीलिंग को अपनी ज़िंदगी में लाके खुद को हील किया है। आइए आज हम बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को खुश व खुर्रम रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और एंजाइटी से दूर रख सकते हैं। द वे वी बिगिन आवर मॉर्निंग्स वो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं हमारे पूरे दिन पर। मोस्टली आजकल लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उठते के साथ ही अपना सेल फोन चेक करते हैं और वो जो है हमारा जो ब्रेन है उस वक्त जो शांति से दिन के बारे में सोच सकता था, सोल्यूशन सोच सकता था, वो नहीं सोचता और वो एक के बाद रील्स देखे जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा ब्रेन इस वक्त किन चीज़ों से गुजर रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो एक लॉ है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपना टाइम जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया और सुबह से उठ के इन चीज़ों में टाइम वेस्ट किया तो सही से दिन शुरू नहीं होता। बेस्ट तरीका ये है कि आप सेल फोन को उठने के 1 घंटे तक बिल्कुल मत टच करें। आप जो है मेडिटेशन करें, आप प्रेयर्स करें, आप अपने आप को ऊपर वाले के करीब ले जाएं, उसे बताएं कि आज के दिन में आपने क्या क्या करना है और क्या क्या अचीव करना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस थिंग वर्क सो वेल। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने इस वक्त है, क्योंकि एक वक्त ये भी था कि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकल नहीं पाती थी, बट विथ हेल्प एंड विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड विथ प्रॉपर प्लानिंग मैं निकल आई और मैं चाहती हूँ कि सब निकल आए। सबसे पहले सुबह में आपने जो है नहीं लेना फ़ोन, उसके बदले में आप शावर लें, आप अच्छा सा नाश्ता करें, आप नेचर में बाहर जाएं। अब ठंडी हो रही है आई नो, बट थोड़ी देर सनलाइट में बाहर जाना, एयर को अपनी स्किन पे महसूस करना, सन को अपनी आंखों में आने देना और उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करना will take you on a path that will take you to success and happiness. Gratitude से यूनिवर्स बहुत करीब है। अगर आपके दिल में ग्रैटिट्यूड है तो आपको और ग्रैटिट्यूड करने के मौके मिलेंगे, और अगर आपने शिकायतें करने लगे तो शिकायत करने के मौके बहुत मिलेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रैटिट्यूड की तरफ जाना है या आपको शिकायतों की तरफ जाना है। इसीलिए हम अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बनाते हैं। माना कि ऊपर वाले ने हमें पूरी विल दी हुई है कि हम अपनी जिंदगी को एक अच्छे तौर पे सक्सेसफुल पुरसुकून राह पे ले जाएं, या हम अफरा तफरी में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे की गिला गिबत में अपना जो है वो एनर्जी खराब करें और अपनी जिंदगी खराब करें। इट्स अप टू अस। दैट इज माय मैसेज। ट्राई करें, ग्रैटिट्यूड को अपनाएं। हर सुबह उठ के एटलीस्ट 3 अपने साथ जो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें चल रही हैं उसके बारे में लिख लें, एंड देन यू विल सी कि आपको सारा दिन कितनी सारी मिरेकल्स और कितने सारे आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस होंगे। आई एम साइनिंग आउट एंड होप दिस मैसेज स्टेज विद यू। दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय माय हिना जेड स्पा, and I'll tell you about my spa in the later segment. Thank you. Have a great evening ahead. Bye-bye. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अरमान अहमद और ये है खेल की दुनिया, the segment where we talk about the hottest topics in sports today, सिर्फ आवाज़ एंटरटेनमेंट पे। आज के लिए हम बात करेंगे about the National Football League, more specifically the New York Jets. अगर आपने पहले शेक्सपियर के कहानियाँ सुनी हुई हैं, you know that they are tragedies. Much like the New York Jets, they're a tragedy.
क्योंकि Zach Wilson, the quarterback of the Jets, जिसको उन्हें बुलाया the future of this team, उसको निकाल दिया और आगे जाके किसी और को उसको replacement डाल दिया. Now उसको एक scapegoat बना रहे हैं, मतलब कि जो भी इल्ज़ाम है हारने के उसके ऊपर सब कुछ जा रहा है. Now this is horrible because the Jets for the past 20 years have been the worst franchise in football. उसकी गलती थोड़ी है कि Aaron Rodgers को चोट लग गया, and because of that, everyone's feeling like this season is at a loss. But you can't blame Zach Wilson. This guy used to be a college legend. In this season, he's only had 6 touchdowns to 7 interceptions. Uski galti nahi hai. Kyunki the New York Jets have always been historically bad. 13 saal ho gaye ke Jets playoffs tak pahunche nahi. This was the year in 2010. I was in diapers basically at this point in the 5th grade in kindergarten. 2010, since then, their record has been 85 wins to 135 losses. Hari jane aur ilzam Zach Wilson pe lagai jane, this is ridiculous. They've had 5 different quarterbacks. Geno Smith, who's playing amazing on a different team. Sam Darnold, Ryan Fitzpatrick, Mark Sanchez, Aaron Rodgers, Brett Favre. They've had 4 different head coaches, Robert Saleh, the current one, Adam Gase, Todd Bowles, Rex Ryan. And you're still blaming this guy? This is ridiculous. मेरा क्या suggestion है कि उनको team को भेजना चाहिए. The owner of the team is Woody Johnson. And now Woody Johnson needs to sell this team. क्योंकि 20 साल हो गए ये team हारी जा रही है, ना playoffs तक पहुंच रहे हैं, ना उनका कुछ बन रहा है. भेजने के बाद शायद ये team जीते. Future is bright for them. Players हैं उनके पास जैसे Breece Hall, Garrett Wilson, and even Sauce Gardner. अगर ये team भेजेगा तब भी Jets लगता है एक winning franchise बनेंगे. चलिए लगता है आज के लिए हमारा टाइम बंद हो रहा है. ये था खेल की दुनिया. मेरा नाम है अरमान अहमद, and next time we'll talk a little bit about hockey. चलिए अपने ख्याल रखें, and thank you. The Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment. Ji Nazreen, I hope you're still there. I see somebody in that camera. Ah. Oh wait, that's our reflection. Never mind. Max भी देख रहा है अपना Max. Max bhi dekh raha hai. वो Max and Ruby वाला. You see that cartoon? Are you kidding My me? kids love to watch that. There's a Max cartoon and called Ruby. Max and Ruby about 2 rabbits who live alone with their grandmother. Parents पता नहीं कहाँ हैं. Acha. Anyhow. They never showed the parents in the entire No, show? never. They always, there's 2 bunnies, a sister and a brother, Max and Ruby. And they live with their grandma bunny. I think what they're indirectly trying to show is the non-nuclear family. Oh. They're trying to tell you indirectly that it's okay to not live with your mother and father. सही कह रहे हो. मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो. ये हमारी स्टोरी नहीं है आज की. ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये यार मैं थोड़ा सा फ्लू एंड फीवर हुआ है ना मुझे आज. लग रहा है आज आपकी बातों से. We'll stick to the script. Yeah. I was saying before the break कि आज हम आपको 2023 की 2023 की biggest story यानी कि सबसे बड़ी कहानी सुनाएंगे आज. अफसाना सुनाएंगे हम. कहानी सुनो. 2023 में a lot of things happen, war and peace, World Cup, wins and losses. But this trumps that. Whatever we're going to talk about. Even this trumps even Donald Trump. It does. This trumps Trump. Nothing trumps Trump except for this. Yes. Biggest story of 2023, and this is global, worldwide. After the pandemic. No, Abdullah, you're wrong. It trumps the pandemic. It trumps the pandemic. Because nothing affected the world more than what we're about to say. And you know what, Abdullah? This is serious. This is really serious. Drum roll हो जाए. सुनाई दे रहा है? ये मेरा पेट है वैसे मेरा. ये आपका पेट है. हाँ. Bum roll. The biggest story, ladies and gentlemen, of this year was inflation. महंगाई. मैं stats में जाना नहीं चाहता, लेकिन in some countries, this was global all across the universe. Or the world. Or all the world. Or all the universes, or all the worlds. Aliens ने भी मुझे बताया. Aliens भी कह रहे हैं यार ये जो 7.6% ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया. 7.6 was, you were lucky to have 7.6, yeah. England वगैरह में 10.9, Pakistan was 12-13%. I don't want to get into the numbers. We in Canada went all the way up to 8.9, which was on the lower end, by the way.
लेकिन we to this day, we're in December, still feeling the effects of what took place Yeah. in 2023. Inflation अब कंट्रोल में आ गया है, थोड़ा बहुत मतलब लेकिन गैसोलीन जो है, जिसको आप पेट्रोल कहते हैं, हाँ पेट्रोल और सब्जियां, तरकारियां, भाजी और ये सब जो है अभी तक महंगी है। तो खाना पीना जो है हमारा भी और गाड़ियों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। भाई घास घूस खाएंगे हम, बस और क्या कर सकते हैं। हाँ, साइकिलों में चलेंगे और घास घूस खाएंगे। That's why we thought कि भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंस ना आपको हम अपने पुराने कुछ स्किट्स दिखाएं कि ah लोगों ने महंगाई से कोप कैसे किया। महंगाई में people had to come up with different ways to cut corners, to we got very creative during this period, right? And we also became very, very patient, and our mindsets have changed of how we do spending because of this. We really have changed our entire outlook on life from a financial perspective, and because we've changed it as a financial, it's affecting all aspects of our life. Absolutely. इसीलिए सबसे पहले हम पेश करेंगे आपको कि घर में क्या हो रहा था। महंगाई जब बढ़ रही थी तो लोग किस तरह उस महंगाई को क्या कर रहे थे, कॉम्बैट कर रहे थे। Combats. हाँ, तो ये देखिए पहला स्किट पेश खिदमत है। अरे आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। अच्छा जब आ जाए तो बता देना, ठीक है? ओ भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज कोई एडविल, टाइलेनॉल वगैरह ला दो यार। भाई दवाइयाँ पता है कितनी महंगी हो गई हैं, मैं नहीं दे सकती दवाई। महंगी हो गई हैं। चाय बना दो प्लीज। चाय? वो तो मैंने मेहमानों के लिए रख दी। चाय तो नहीं हम घर में बना सकते। मेहमान? हाँ। कहाँ है भाई मेहमान? इतनी महंगाई हो गई है, कोई आएगा तो मैं उनको क्या दूंगी? थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज, ये वो भी महंगा हो गया है। हाँ पानी मिल सकता है, बिल्कुल। ये ले पूरा का पूरा जग ही पी लें। सही है? क्या हो गया आप? अच्छा खाने में क्या बन रहा है ये बताना जरा। खाने में तो नहीं कुछ बन सकता क्योंकि घर में कोई ग्रोसरीज नहीं है, बहुत महंगाई हो गई थी और आपने पैसे भी नहीं दिए थे। कहाँ से लाती? पैसे कैसे? तो कुछ नहीं बना? थोड़ी सी ऐसा करो चिकन बिरयानी बना दो, बहुत मूड हो रहा है मेरा। चिकन बिरयानी? गोश्त के तो पैसे ही नहीं थे, तो गोश्त तो आया ही नहीं। अच्छा ताहिरी बन सकती है, आलू और आलू 3 गुना महंगे हो गए, पता है? आज ही मुझे अफशीन ने फोन करके बताया था। तो क्या अब आलू नहीं मुनासिब होंगे क्या हमें? नहीं, हम बाहर से खा सकते हैं जाके। अच्छा बाहर फ्री में बट रहा है खाना है, वो पैसे कौन देगा? वो तो मैं दूंगा। जाहिर है, और कौन देगा? अरे यार कहाँ मर गया मैं। अच्छा चलो फिर जल्दी से तैयार हो, चलो मुझे भूख लग रही है यार। हाँ तो फिर चल के करते हैं ना। वो मेरी दोस्त के हस्बैंड भी गए हुए हैं बाहर, तो मैं उससे भी पूछ लेती हूँ, वो भी अगर साथ चल रहे हैं हमारे। बेचारी अकेली बोर हो रही होगी ना। अच्छा मैं 2 लोगों के बजाय 3 लोगों का बिल दूंगा। पूछ लूं मैं? प्लीज जो करना है जल्दी कर, मेरी माँ भूख से हेलो। मर हाँ रहा हूं मैं। अफशीन, हाँ हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, तुमने चलना है साथ? चलना ही होगा। कढ़ाई वाली जगह पे। हाँ वही हमारी फेवरेट। बच्चे हाँ तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ पूछ लो, फुप्पी आई है, ठीक है, उनकी फैमिली को पूछ लो। हाँ तो मैं 10 लोगों की रिजर्वेशन करवा देती हूँ, ठीक है? ओके आ जाओ। ओके सी यू, बाय। बस 10 लोग। हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? जी नाजरीन, देखा आपने, लोगों ने, जैसे कि आपने देखा, मियाँ बीवी ने ग्रोसरीज करना कम कर दी। ना घर में आलू आ रहे हैं, ना बिरयानी पक पा रही है। बाहर खा रहे हैं लेकिन हाँ बाहर खा रहे हैं भाई, बाहर खाना जारी रहा। बाहर खाना, रेस्टोरेंट्स फुल, महंगाई है लेकिन लाइनें लगी हुई हैं। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। Did you see what happened on Black Friday? Black Friday वो काला जुमा। लेकिन we got to be very careful about that, no? I mean, yeah, काला जुमा। In some places every day is a काला जुमा, लेकिन हम उस पे काला कपड़ा चढ़ा रहे हैं अभी। We cannot talk about that. I wonder what we're talking about. तो हर चीज पे बैन लग जाता है यार। हाँ एक तो ये है यार कि बैनिंग बहुत हो रही है यार। कौन है ये? बैन है कौन? किसकी बैन है ये बेंजामिन जो है ये, इसको यार इसको मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा इसको। भाई बैन और उसको बैन कर देंगे। बैन क्यों है? माँ क्यों नहीं है? Anyhow,
ब्लैक फ्राइडे पे लाइनें लग रही हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा, महंगाई थी, that's a fact, but people were going crazy over sales. जहां सेल का लफ्ज नजर आता था, लाइनें लग जाती थी. नहीं यार, लेकिन this is an instinct, right? It's become an instinct now. You can't get anything, man. You No, can't. because that's how it works. People, businesses All जो होते हैं, psychological, retailers play on that. Yeah. It's a play on words. Yeah, it is on words, man. Like for sale, like this, up to this much off, you know, and. और ब्लैक फ्राइडे तो सिर्फ यहाँ कनाडा, अमेरिका या यूरोप में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह हो रहा है भाई. वहां तो बहुत ज्यादा काला जुमा है. काला जुमा हो रहा है. It's very kala over there in Pakistan, you know. वहां तो जुमे में नहीं, सब दाल में भी काला मिलेगा आपको. वहां तो जुमा नहीं है, मतलब Monday to Friday काला होता है वो. But interesting story. पाकिस्तान में last year somebody told me कि वो ब्लैक फ्राइडे पे मौलवियों ने इतना एतराज किया, they had to change the name from Black Friday to Blessed Friday. Really? Yeah. और फिर मौलवी पहुंच गए. ओ जी चलो जी, Blessed Friday. अल्हम्दुलिल्लाह. पकौड़े खाएंगे. But seriously, man. Anyways, that's the Abdullah. I'm going to cut you off just a second. Yes, please. That is the worst place to take lessons for Deen, man, for Islam. Go to Pakistan. From Maulvis? From Maulvis in Pakistan. Best place. It's the worst place to get any kind of Islamic education. Yeah, anyways. You don't want to open that can of worms, because that could be a whole episode on its own. Oh, we're going to have that. The Maulanas of Pakistan. The Maulanas of Pak. We're going to have that as a... Abdullah, we're going to do that for the next segment. Yeah, no, we have to talk about that in one of our episodes. Inshallah. تعالى हम दुआ करेंगे, just like the Maulanas do. Alhamdulillah. Oh, कितनी हसीन खातून. Oh, alhamdulillah. That's what they do, man. I know, man. I shouldn't have said that, but I mean, it's true. I've seen them do that to goddamn turkeys, man. I know. If that's the definition of the word you just used. I don't want to say it again. Right. लेकिन बहरहाल मौलवियों की बात हो रही है, मुहज़्ज़बाना लोगों की बात हो रही है. तहजीब याफ्ता लोग, उर्दू दान लोग भी परेशान हो गए इस महंगाई से. ऐसा वक्त आ गया कि शरीफ लोग भी बैंक्स को लूटने लगे. देखिए आप. आदाब सर, फरमाइए मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जीती रहिए बिटिया. मामला कुछ ये है कि आपको तो पता ही है, महंगाई का जमाना चल रहा है, हालात कुछ नासाज हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम आपका बैंक लूटने आए हैं. Oh, no! जी. और अगर आपको जहमत ना हो तो 100 की 50 गड्डियां आप किसी छोटे से बकस में रखकर हमें दे दीजिए. हम यहाँ से आराम से तशरीफ ले जाएंगे. गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन ये तो बड़ी गलत बात है. अगर मैं चाहूँ तो एक बटन दबा के पूरे बैंक की घंटी बज जाएगी. ना बेटिया, ऐसी गुस्ताखी मत कीजिएगा. वो असल में इस शाल के नीचे हमने कुछ जानलेवा असलहा छुपा रखा है. और अगर उसका इस्तेमाल करना पड़ जाए तो हम गुरेज ना करेंगे. आप बड़ी सहमत दे रहे हैं, लेकिन अर्ज ये किया है कि अगर 50 की गड्डियों के बजाय 25 की हो जाए तो कबूल होगा आपको? महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, और हमारे बैंक के हालात भी काफी नासाज हैं किबला. आप महंगाई की बातें हमसे ना करें. हालात का हमें अंदाजा है, इसीलिए आए हैं हम तो ज्यादा सोचकर आए थे. वो तो हमारी शराफत है कि हमने सिर्फ 50 गड्डियां मांगी, और आप 25 की बात कर रही हैं. ये तो आप दिल तोड़ रही हैं हमारा. अच्छा 30 दे दीजिए, उससे कम हम नहीं जाएंगे. चलिए देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. जल्दी कीजिए बेटिया. A few moments later. चलिए ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपकी बात रख लेते हैं. अच्छा आप ये बताइए, आज आप इसकी रसीद आप लेंगे? अरे नहीं
बेटा रसीद का तकल्लुफ मत कीजिए। ये देखिए, ये हिसाब किताब तो अल्लाह के घर हो जाएंगे बरोज़े क़यामत। बस आप पैसा दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस आप दुआओं में जरूर याद रखिएगा और एक ख्याल जरूर रखिएगा, जी अगली दफा जब आए तो इतवार के रोज नहीं आना। इतवार के रोज हम कारोबार नहीं करते। और एक और बात, बक्सा अगली दफा अपने साथ जरूर लेके आइएगा। जी जी, अगली दफा बिल्कुल इंशाल्लाह अपना बक्सा हम ले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नवाजिश और करम आपका। अच्छा बेटी, ये जोहर का वक्त हो रहा है, नमाज ना निकल जाए। यहाँ वुजू करने की जगह अगर हो तो बता। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा करिए कि सीधे जाइए, सीधे जाके दाएं हाथ पे मुड़ जाइए, वहाँ गुस्ल खाना है। और हाँ, पानी बिल्कुल मुफ्त है, आपको पानी लूटने की बिल्कुल भी जरूरत दरपेश नहीं आएगी। बड़ा करम, बहुत बहुत नवाजिश बेटा, ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। आपने देखा आपने? हाँ किबला, किबला ये जो किस किस्म की यार शराफत का मुजाहिरा किया है मुजाहिरा, उन्होंने। ये तो बस astaghfirullah, astaghfirullah. No, but that tells you, man, that this thing, inflation, it doesn't leave anybody. It doesn't. See, even the elite, not the elite, but the elite, but sophisticated, the cream of the crop with the respect to cream, our the elegant ones. Yeah. तो भी वो मजबूर हो गए कि वो जाके बैंक रॉब नहीं करें, loots. बैंक शराफत से लूटें, बदमाशी से नहीं, Shut up. हाथ जोड़ के लूटें, हाथ खोल के नहीं। बेटा जरा कुछ $5 हो तो दे देना। मुझे वो एक आलू खरीदना है बस। मुझे पानी पीना, बस सांस लेनी है भाई बेटा, मुझे बस सांस लेनी है। बहरहाल ये है situation. शुरूफा थे, लेकिन another thing that became very common in the last year are robberies, muggings. There was a big remember that I think this was in the summer when they caught a gang of 30 Yeah. अपने ही लोग थे, कुछ अपने ही थे वो, उन्होंने सरदार पूरा एक रिंग बनाया हुआ हाँ, लेकिन ट्रकर्स का। वो ट्रकर्स को लूट रहे थे बेचारे। हाँ, वो ट्रकर्स को लूट रहे थे। हाँ। What is that, Fast and the Furious or something? Yeah, it was very fast and very furious. Very furious, man. It's very there was apparently a ring of 30 क्या कहने चाहिए उनको, गैंग था, the gang, जो बड़े-बड़े ट्रक्स और ट्रेलर्स को हाईजैक करके उनका माल लूट रहे थे, and they were selling that stuff on eBay and stuff, Amazon yeah. and well apparently they were caught. लेकिन इतना आम हो गया ये लूटना, banks को लूटना, street muggings became very common. And Abdullah, my question to you is this for this particular discussion. These 50 gang members of this ring, क्या ये inflation और गुर्बती की वजह से, या not poverty, but I mean like महंगाई की वजह से ये एक motivation था, ये incentive, या ये that was something that was a separate entity on its own? ये muggings वगैरह जो हैं, that's all coming from the frustration of महंगाई. I'm telling you. No, muggings and robberies like car theft has been on a high. Yeah. Ever since in the last year and a half. Because, लोग मजबूर हो गए। Abdullah, it also mental awareness, mental instability as a result of महंगाई is also a big issue. लेकिन another thing that happened because of महंगाई is the cunning became even more cunning. Innovation शुरू कर दी भाई। अच्छा। पैसा अगर इस हाथ से नहीं बन रहा तो दोनों हाथ से बनाओ। नोट छापो भाई। Jack up prices for no reason. Just because everything else is महंगा. Yeah. Just gouge as much as you can gouge. इतना gouging, that's the word I'm looking for. इतना gouge किया है, banks ने gouge किया, grocery chains ने gouge किया. हमारे जो next door neighbors हैं वो gouge कर रहे हैं. हाँ. और तो और ये mechanics तो करते ही थे gouge. हाँ. लेकिन dry cleaners, laundromats, वो भी शुरू हो गए वो. और उनको ड्राई क्लीनर्स को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मैकेनिक्स को ही गाउज करना शुरू कर दिया। देखो यार, बात ये है कि जब हालात ऐसे हो जाते हैं ना, फिर बंदे को जो ना, इंसान को, he has to adjust and he has to make that difference for himself. Yeah. And we're not making this up. आप खुद देख लीजिए in our next skit. Watch what happened, how this cunning little laundromat dry cleaner guy, this cunning guy, इस बेचारे मैकेनिक की। लेकिन I liked him. I liked him. Let's watch this. $745. जी.
अरे आप तो हाउ आर यू, आप तो वही मैकेनिक है ना? जी जी, मैंने आपको पिछले हफ्ते कोड दिया था अपना मैकेनिक का सफाई के लिए। हाँ जी बिल्कुल रेडी हैं, अभी लाता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा ये, अच्छा चलें, ये आपका हो गया है। और कितने पैसे हो गए बताइएगा? ये जनाब सब कुछ मिला जुला के बनता है $745 जी। 745 जी 745 बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब वो क्या कहते हैं अपना, वो स्पेशल है हमारा, प्रमोशन हो रहा है हमारा। डॉलर के रुपए? हाँ नहीं ये हम ये उसमें रूबल्स में कर रहे हैं, डॉलर ही है भाई। तो भाई ये कोट है, इसमें ऐसा क्या कर दिया कि 745 हो गए? देखें मैं समझाता हूँ सरकार। ये हुआ यूं कि ड्राई क्लीनिंग के वक्त हमने जब ये इस सूट का कॉम्प्लीमेंट्री मल्टी पॉइंट इंस्पेक्शन हमने किया था, तो उसमें हमने देखा था कि तो बहुत कुछ ज्यादा ही सड़ गया था ये, और वैसे भी सड़ा हुआ जैकेट, मतलब सड़ा हुआ जैकेट तो आपको तो पता ही है। खैर इसमें काफी डिफेक्ट्स हैं इसमें, तो उसकी वजह से। लेकिन मुझे भी याद आया था जनाब कि आपने मेरी गाड़ी की सर्विसिंग की थी। ओह जी, मैं भी कहूँ आप जाने पहचाने लगे। आप अपनी वो गाड़ी लेके आए थे C300 मेरे पास, उसका कोई ऑयल चेंज का था, वो मेरे ख्याल से 150 का, वो $150 का था। मैंने क्या 1100 मैंने वो पे किया था। नहीं, वो तो मल्टी पॉइंट इंस्पेक्शन की ना, गाड़ी की बिल्कुल थी। अच्छा अब मैं समझा यार, लेकिन ये तो कोर्ट है ना, इसमें कोर्ट जो है ये, इसमें भी मल्टी पॉइंट इंस्पेक्शन होता रहता है जनाब। ये आप क्या समझते हैं, कोई मजाक है ये? तो इसमें कौन से आपने टेक्निकल डिफेक्ट्स निकाली? को इसका ऑयल चेंज कर दिया है, इसके क्या रिम सड़ गए थे? देखें इसके जो, अगर इसका ऑयल चेंज की थी, उसकी हालत ही नहीं है ऑयल चेंज करने के लिए जनाब। आप ऑयल चेंज की बात कर रहे हैं, इसको तो किसी जंक यार्ड में डालना चाहिए इसे। अच्छा देखिए ये सूट काफी पुराना है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि काफी पुराना सूट है। इसके अंदर जो पॉकेट्स है ना, वो भी मतलब खराब हो गए थे, और मार्केट में स्पेयर पॉकेट्स नहीं मिल रहे थे। तो यार मॉडल की तो खास मतलब मैं बस बता रहा हूँ। अच्छा, यार मेरी बात तो सुनिए ना, सड़ा हुआ जैकेट है वैसे। मैं आपकी बात समझ कुछ ज्यादा बेइंतहा सड़ा हुआ जैकेट है, लेकिन ये मैकेनिक वाला कोट है, तो इसने तो सड़ा ही होना। सारा दिन गाड़ियों के नीचे बैठ के हम ये अच्छे बहाने हैं आपके। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप एक नया सूट आप नहीं खरीद सकते? कि मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ, 745 बड़े अफसोस की बात नहीं ले आता। चार नहीं है। अच्छा यानी आप इतना मतलब आप वो $745 के आप इतनी वो इतना ड्रामा कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं आप तो अमीर आदमी हैं जनाब। क्या मसला है आपके साथ? $1100 आपको याद है? या आप मुझे बताएं, मेरे से कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जिसकी आप मुझे ये सजा गुनाह 745 का बिल बना? अच्छा देखें इसके ऊपर जो है वो मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। ये जैकेट जो ना आपकी वो क्रिटिकल हो गई है अकॉर्डिंग टू आवर मशीन्स एंड आवर सिस्टम्स। उसमें वो इसने एक्नॉलेज किया कि ये क्रिटिकल जैकेट हो गई है। इस पर वो जो एक लाल कोड होता है ना, रेड, जो मैकेनिक पहनते हैं, बिल्कुल वही सूरत हाल है यहाँ। मतलब आपको ये पता है ना, मैं आपको जैकेट दे के आया हूँ, मैं आपको अपनी गाड़ी दे के नहीं आया। जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं वो सारी गाड़ी की है। देखें ये जमाना जो ना बदल चुका है। एवरीथिंग इज ऑल इंटरमिक्स्ड। मैकेनिक्स और लॉन्ड्रोमैट्स, ड्राई क्लीनर्स और मैकेनिक्स। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप ज्यादा मतलब बहस ना करें आप। हाँ प्लीज पहन लें। पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। अच्छा पागल से और भी कोई चीज अच्छा, आपने की या नहीं देखें पहली बात तो ये हमारा बड़ापन है। ये नहीं छोड़िए यार, आप नहीं मैंने बहस करनी। ये 745 जो है ये असल में 1000 का था। ये रखिए आप, और ये देखिए $1000 कीप द चेंज। अच्छा मैं चलता हूँ। ये देखिए $100 का मैंने आपको प्रमोशन भी दे दिया। आपको मैंने ये डिस्काउंट पे दिया है। आपको चेंज रखिए, $1000 $60 टिप रखें, 750 आपका चार्ज। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और दोबारा ना आप अपनी गाड़ी लाइएगा ना मैं अपना कोट लाऊंगा। कोट नहीं लेके आएंगे। बहुत बड़ी खुशी आपसे मिलके, बहुत खुशी आपसे मिलके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या समझता अपने आप को साथ। क्या तरीके ढूंढ लिए लोगों ने। मुझे अच्छा लगा, मैं इंस्पायर्ड हो गया मैं उससे, लॉन्ड्रोमैट वाले से मैं बहुत ज्यादा। ये यार देखो, इफ यू कैन नॉट गो टू द लॉ, इफ यू कैन नॉट गो टू समवन फॉर हेल्प, देन हेल्प योरसेल्फ। यू नो व्हाट्स वो कहावत क्या है कि if you can't beat them, join them, become vigilante। और इस वक्त इस बैंडवैगन पे बेचारे ड्राई क्लीनर्स, ये मैकेनिक्स, ये अपना ये मॉम एंड पॉप शॉप्स वाले, ये बेचारे तो छोटे खिलाड़ी हैं। You know who the biggest players are? Can you tell me who the biggest players are right now? Who are the biggest players? मतलब सुपरमार्केट्स और रिटेलर्स के अलावा the biggest
I shouldn't say this, man, because Thanks. I'm connected to that industry. I was just gonna say. The FIs, the financial institutions, Oh my goodness. the insurance companies. You be very careful about what you're gonna say next, हाँ. my good man. यार इस चीज को एयर मत करना बस मेरा चेहरा कवर कर देना. But no, it's true. A lot of it is what it is, Abdullah. a lot of जिसको वो कहते हैं ना Ponzi schemes, those started to pick up. Ponzi schemes इतनी जो पहले भी होती थी आम, वो और भी ज्यादा आम हो गई हैं. खाने वाला आम नहीं. आम खास हो गई, खास. They have become the biggest and the easiest क्या कहते हैं, threat to, especially to older people. The thing is, Abdullah, that when you are in a situation where you know you can take advantage, okay, you know you have the ilm, you have the knowledge, you know you can take advantage of the person who is very desperate. That's where business prospers. Exactly. You prosper on the backs of the people who are looking for help from you. Absolutely. What most people, as Bड़ी Harun said, शर्म की बात what most people look at as a problem, some people look at it as an opportunity. As an opportunity. और इसीलिए हमने ये अगला जो स्क्रिप्ट चुना है, उसमें एक ब्रोकर ऐसा opportunist है कि वो देखिए किस तरह, I wouldn't call it a Ponzi scheme, but it should be named something. It should be. Ponzi scheme. Gonzi scheme. Jonzi scheme. 420 scheme. हाँ, देखिएगा. This is a good one. It's a good one. Good return. Yes. Hello. कैसे हैं साहब? बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बढ़िया. Very good. आपके पास एक गुजारिश लेके मैं हाजिर हुआ हूँ. हाँ जी, बोलिए. So I've been investing my money into stocks, crypto, और कुछ खुदा का करना ऐसा हो रहा है कि ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं. Oh no! तो आपके पास मेरी गुजारिश ये है कि कोई ऐसा हल बताएं, पैसे लगे थोड़े, लेकिन इन रिटर्न बड़ा चाहिए आपको. समझ गए. सबको बड़ा चाहिए. सबको बड़ा चाहिए. बिल्कुल. समझ गए. नो प्रॉब्लम. देखिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कम. ये तो दस्तूर है. दिस इज द लॉ. लो इन्वेस्टमेंट, ग्रेट रिटर्न, है ना? ये हमने करना है. तो आप पानी पीते हैं? वाटर. यस वाटर. पानी. ये जो पड़ा आपके पास पानी. आप पानी पीते हैं? कौन नहीं पीता ये पानी? हर एक तो पीता है. कई लोग होते होंगे सर, तभी हम पूछ लेते हैं कि पानी पीते हैं कि नहीं. तो आप पानी पीते हैं. यू ड्रिंक द वाटर. वेरी गुड. अच्छा, वेरी गुड. अब आप पानी पीते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक काम दूंगा. अब ये देखिए, सलाह बहुत जरूरी है, सुनिएगा वेरी केयरफुली. आपने क्या करना है, आप जैसे काम पे सुबह जाते हैं, वापस आएंगे, यू रेस्ट एट होम, वेक अप एट नाइट. रात को उठिएगा. तो रात को उठिएगा. सुनिए, पहले बात सुनिए. देखिए, ब्रोकर हम है ना, इन्वेस्टमेंट देखिए, है ना? तो बात सुनिए. तो आप क्या करेंगे, आप रात को हर रिसाइकल की जगह पे, जहां पे कूड़ा होता है जमा, वहां पे आप जाएंगे. जहां पे कूड़ा, पूरे शहर में जहां कूड़ा इकट्ठा होता है, अब वहां पे जाके आप ऐसी सुंदर सी प्लास्टिक की बोतल लें. पर देखिए, जरूरी बात, ढक्कन होना चाहिए. पानी नीचे, खाली बोतल नहीं, खाली बोतल. ठीक, खाली बोतलें ढेर इकट्ठी कराएं. और साहब रात को घर ले आए. ठीक है. और उनके अंदर पानी भरे, अपने टैप से निकाल. पानी भरे, सुनिए, पानी भरे टैप से निकाल के उसके बाद ये ढक्कन लेके इसको ऐसे कस देना. अच्छा, अब इनको आपने इकट्ठी करना, सुबह दुकानों पे जाके बेचना है. जीरो इन्वेस्टमेंट सर, 100% प्रॉफिट है. हो गया जी, हो गया. बताइए. मैंने आपको बताया है कि, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी रात को जागूं, बोतलें इकट्ठी करूं, टैप वाटर भरूं और फिर उनको बेचूं. मुझे कोई और आइडिया, कोई अच्छा आइडिया दें, साफ सुथरा आइडिया. अच्छा, जो कचरे में ना जाना पड़े मुझे. इन्वेस्टमेंट करनी और रिटर्न चाहिए ना. ठीक है जी बिल्कुल. कॉफी पीते हैं? कॉफी कौन, जिंदगी में एक ही अच्छी चीज है मेरी, वो कॉफी है जिसने जिंदा रखा हुआ है. कौन नहीं पीता? मैं आपको मारना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा जी कि कॉफी में आप एक कॉफी में कम से कम $3 खर्च करते हैं. 2 कॉफी आप लेंगे, आप $6 खर्च करेंगे. 30 दिन आप कॉफी पियेंगे, $180 आप ऐसे ही खर्च कर देंगे. आप काम क्या करेंगे, आप कॉफी मत पिए, पैसे बचाएं. आप देखिए, वो पैसे जो आप बचाएंगे, ठीक है, आप हमारे पास लेकर आएंगे. चले, हम उनको इन्वेस्ट करेंगे और आपका रिटर्न
चले मैंने मान ली आपकी बात, मैंने कॉफी छोड़ दी, जिंदगी में खुशी खत्म हो गई, $180 भी बच गए महीने के। किधर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप वो मेरे पैसे जब मैं लाऊंगा आपके पास? हमारे दोस्त की कंपनी में। ओह, तो आपके दोस्त कंपनी भी चलाते हैं? कौन सी कंपनी है आपके दोस्त की? जी, वाटर बॉटलिंग कंपनी। और कौन सी कंपनी? 0 इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट जी। बस हो गया जी, करिए जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुनिए, इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई कंपनी जो है ना वो चेंज कर ले, कोई नई कंपनी लेके आए इन्वेस्टमेंट में। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। करिए। फास्ट फूड खाते हैं? बर्गर, मैकडॉनल्ड्स, वो जो खा के भागते हैं फास्ट फूड? नहीं, वो तो दूसरी वाली खाने वाली चीजें होती है। नहीं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट वाला। जी जी, बिल्कुल, कौन खाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप मत खाइए। ओह, शुक्रिया आपका। नहीं, ऑफ कोर्स। अब आप खाइए। आप क्या करिए, उनको खाने के बाद उनके डब्बे होते हैं, सुंदर से उनके डब्बे होते हैं, बड़े सुंदर से डब्बे होते हैं उनके। आप उन डब्बों को बचा के रखें, सारे इकट्ठे करके बचा के रखें, ठीक है ना? अब एक बार आपने बचा के रख लिया, आपने करना क्या? आपने उनको जाके रिसाइकलिंग की जगहों पे जाके बेच देना। उनसे आपको मिलेंगे पैसे, आगे पैसे भी आएंगे। अब वो पैसे आप लाके हमें देंगे, हम जाके उनको इन्वेस्ट करेंगे और आपका रिटर्न देंगे आपको। ओ, आइडिया भी नया, जिसमें मुझे कूड़े में भी नहीं जाना पड़ना, और कंपनी भी अब डिफरेंट होगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। चले मैं ले आया पैसे, तो किधर इन्वेस्ट किधर करेंगे आप अब? जी, वाटर बॉटलिंग कंपनी मेरे दोस्त की, 0 इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। अरे देखिए, परेशान मत होइए, आप पानी पीजिए ना, ढक्कन खोल के पानी पीजिएगा। पानी पीजिए। रोजी जरा और भी लाना, पानी पीजिए। ये पानी रखें आप अपने पास, चुल्लू बनाएं, उसमें डालें और डूब मरें। मुझे नहीं करनी इन्वेस्टमेंट आपके पास, मैं जाता हूं किसी और के पास, जो ना मुझे कचरे में भेजेगा और ना हर चीज उसकी गोल घूम के पानी पे आएगी। बाय। आप लोग बड़े मायूस हो गए होंगे। किसी को नहीं छोड़ा। बैंक्स, सुपरमार्केट्स, गैस स्टेशंस, मैकेनिक्स। अब्दुल्ला, क्या मुहावरा है वो, या इंग्लिश में क्या है? डॉग ईट डॉग वर्ल्ड अदर। इसको जरा उर्दू में जरा तर्जुमा करो उसको, या उसका इक्विवेलेंट करो उसका जरा। कुत्ते को जो है वो कुत्ता ही खाता है। आई थिंक दैट इस दुनिया में कुत्ता जो है वो कुत्ते को खाता है। हाँ, कुत्ते जो हैं वो कुत्तों को खाते हैं। Say that in Danny's voice. कुत्ता dogs. कुत्ता। I remember that line from Rugby Puzzle where he goes, आओ अपनी बीवी को बचाओ, कुत्ता। बीवियों को भी बचाना पड़ रहा था इस साल। हाँ, seriously. Because you know how women usually control the finances of the household. हाँ। और उनको इस साल अपने आप को they had to restrain themselves. हाँ। From spending, from being a little really spendthrift. Because a lot of people ran out of what's that income called? There's staple, no, staple nahi. There's business discretionary. Discretionary was at a minimum. क्योंकि था ही नहीं भाई। जब वो आलू $5 का मिल रहा है, उसके स्लाइसेस करके जब 5 बच्चों को खिला रही है बेचारी माँ, तो और क्या खरीदेगी? वो जैकेट वैकेट और पर्स वर्स तो नहीं खरीद सकती ना। गुची के हैंडबैग्स तो फिर नहीं वो अफोर्ड करेगी। यार डिपेंड करता है यार। That's the problem in our society. There are still people those women who are still buying those Gucci handbags, okay? Yeah. There are they're still on sale. people doing that. And they're on sale. Because what cost $5,000 now it costs $4,999. That's $1 saved right there. एक रोज आप $1 सेव करेंगे तो कितने होंगे आपके पास? यार $30 हो जाएंगे आपके महीने में कम से कम। उससे फिर हम Chinese खाएंगे। Chinese. Anyhow, last but not least, the only people we have not mentioned, I guess, we've covered everyone. इस महंगाई में जिन्होंने हमें सबने लूटा, वहां पे अपने हमारे हकीम, हमारे क्या कहते हैं तबीब, हमारे डॉक्टर्स वो क्यों पीछे रहते वो? आप बताइए। आखिर उनको भी कुछ कमाना है यार। उनको भी 2 घर हैं तो तीसरा भी तो बनाना है ना। हाँ बिल्कुल, अपनी जो अपनी गर्लफ्रेंड है उसके लिए घर बनाना है। हाँ, जहाँ उनके गैराज में 4 गाड़ियां हैं तो वहाँ 5 नहीं ले सकते क्या? वो इंसान नहीं है वो। Keep up with the Maliks, with the Kapoors. So
Doctors, not just in Canada, but I sounded like Obama there. You did sound. The doctors in Canada. And the United States of America. Wow, that's pretty good. And Pakistan. And he always hesitates, right? And what we need to do is try to understand. उसने भी खूब बनाया होगा. खैर, उसको हम touch नहीं करेंगे. नहीं touch करना, उसको नहीं छुएंगे. We can't touch him for a lot of other reasons too. Right, because it's just not appropriate. Yes. Okay. तो आखिरी स्किट देखिए कि डॉक्टर्स ने भी कैसे कैसे तरीके ढूंढ लिए लोगों को चूना लगाने के लिए. Last but not least, they're supposed to help us. The docs of the world. Let's see that. देखिए. Hey, Doc. Yeah. Oh, hello. You know, I knew you couldn't see me. So, anyway. Glasses. Right. Yes. I've got this palpitation in my heart. I don't know what's going on. I feel it. There's some sort of rhythmic. Your issue. heart? My heart. Your heart? My heart. Okay, give me. Yeah. Can you tell? Sorry, one second. Yeah, I was so silly. I'm so silly. I'm so sorry. I'm sorry. This yeah. is so busy. I understand. Okay. So what are we looking at here, Doc? Yeah? Okay. Take it. Is it okay? I got it. Everything's good. You just take Tylenol. Take 2 times 5 times 7 and 9. That's it. Excellent. Go pharmacy. You're good to go. Thank you. Thank you very much. Everything's so good. My heart's good? Everything's good. Okay, God bless you. My heart's great. Okay. A few moments later. Hi, doctor. Yes. Yes, I need a full stock of Tylenol. Okay? I need it here in 20 minutes. Okay, bye. Hi, my eyes really hurt and I'm having vision loss. Oh, hi. Yeah, I'm hi. sorry. Yes. I have eye pain and I can't really see anything properly. Can you please have a look? Yes, absolutely. 1 second. Let me finish this. Done. Okay. Eyes? Yeah, One my second. eyes. Yep, just come forward. Okay. Sideways. I need to see your ears. But it's my eyes. I have. Oh, 1 second. 1 second. Okay. It's my eyes. So can I see your arm? Okay. 1 second. All right. You'll take Tylenol 3 times a day, few drops of Visine in your ear, and you will be perfect. Have a beautiful day. Thank you. Thanks. Oh, sorry, phone. Yeah. Where's my Tylenol? Please. Thank you. I need my samples. Thank you. A few minutes later. Hi, doctor. Oh, hello. Yes. I remember you. You had the headache. Listen, don't worry. No problem. No. 1 second. I remember the headache. But Don't worry. today it's the bad. Tylenol 3 times 2 a day and some calcium also. All right? That's all you need. You will be perfect. Have a beautiful day and I look forward to you getting better. Thank you. Rosie, who's next? Nobody? Oh. Acha, you know what? I was looking at you. You did look a little pale today. Come on in. Take some Tylenol and you'll feel better. Okay? See you. Come in 5 minutes. Thank you. हाँ भाई इकबाल, अरे कहाँ हो यार? बहुत दिन हो गए. हाँ, मिले. हाँ, अच्छा हाँ नहीं रात में वहीं था यार मैं. हाँ, बताऊंगा अभी शाम में मिलो चाय पे. अभी बिजी हूँ थोड़ा. पेशेंट आए हुए हैं. ओके. अरे जावेद साहब. डॉक्टर साहब, जो दिल मेरा धक करना चाहिए वो धक कर रहा है. ओह ये तो अच्छा साइन है. खैर बैठिए. जी. चाय पिए पहले. क्या चाय मंगवाऊं? डॉक्टर साहब मैं मर गया. एक मिनट. हाँ छोटू यार वो साहब के लिए चाय लाना यार. वो फ्रिज में मैंने कल रख दी थी आधी प्याली. उसमें थोड़ा पानी मिला के. आ रही चाय. चाय ने मेरे दिल का क्या करना है? मैं मर गया तो चाय एक मिनट. जावेद साहब आराम से. मैं देख रहा हूँ ना. मैं हूँ ना आपके लिए. दिल यहाँ पे. अच्छा वो दिल की बात हो रही है. जी. ओह दिस इज नॉट गुड. जी बिल्कुल, इसलिए तो मैं आया हूँ आपके पास. ये तो मेरा ख्याल है आपका दिल फेल होने वाला है. लेकिन डोंट यू वरी. ये मैं ना करें. ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं आजकल. जी. अभी परसों शुरू किया हमने ये काम. ओह अच्छा. चलो अच्छी बात है. मैं तो फिर बहुत हार्ड का. टाइम के ठीक है. आगे 3 लाख में होता है पर आप अपने बंदे हैं 2 लाख में कर देंगे. 2 लाख में. लेकिन 2 लाख. हाँ 2 लाख में आराम से आप बैठे ना. आप डॉक्टर साहब इससे तो बहुत बेहतर है
अरे ये आपके दिमाग एक मिनट इधर आइए ये पसीना आ रहा है 2 लाख नहीं, ये दिमाग 2 में लाख कुछ ये बल क्यों आ रहे हैं आपके कहाँ पे? उधर उधर देखिए ये तो कैंसर है आपको, तो दिमाग का कैंसर। एक मिनट दिमाग का कैंसर 3 लाख में होता है वैसे, लेकिन हम 2.5 में कर देंगे, फिक्र ही ना करें आप। अच्छा 4.5 4.5 नहीं, ओनली 4। आप देखिए, आप फीस जमा करा दीजिएगा। मेरा दिल ये आपके नहीं, आपके घुटने क्यों कांप रहे हैं? एक मिनट है की हो गया अभी छोटू, वो चाय कैंसिल कर दे यार। हाँ, और इनके बटुए इनका बटुए से 4.5 लाख रुपए निकाल ले। नेक्स्ट। Yeah, man. I don't want to deal with these doctors anymore, man. हाँ, They're supposed to help us. नहीं वही तो यार, मैं तो सोच रहा हूँ अपना इलाज भी खुद करूँ, इलाज भी खुद करो यार, अपना खाना भी खुद उगाऊं अपने गार्डन में, और ये बाईपास भी अपना खुद करना। बाईपास भी खुद करूंगा। हाँ, अपनी, और सिर्फ अपना नहीं, अपनी गाड़ियों का भी इलाज आप खुद करें। गाड़ी का इलाज? मैकेनिक के पास मत जाएं। फिक्स योर कार्स और योर कार, और तुम्हारी तो शायद वो आधी गाड़ी रह गई है। आधी गाड़ी रहेगी मेरी तो। हाँ, दरवाजे नहीं उसके। नहीं, और मैं वो जो चलाता हूँ तो अपने पैरों यूज करके मैं चलाता हूँ, जैसे फ्लिंटस्टोन गाड़ीज। ओके, पत्थर के टायर हैं उसके। यस, या बड़ा बड़ू। But we have to always close off our episodes with some bad jokes. Oh shit. और आज क्योंकि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, inflation is our topic. It's the ये बस इसी के ऊपर वो टिका रहेगा, ये इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन पे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ना इतना इन हो जाऊंगा, उसके इन हो जाओ उसके अंदर, इन हो जाऊंगा कि उसको मैं आउटफ्लेशन में कर दूंगा। आउटफ्लेशन। तो 2-3 जोक्स हैं। They're not that funny, but I still have to say them. Oh no, they're not very funny at all, actually. Yeah. And they're asking us that why are there so many jokes about inflation these days? Right. We don't find that very funny though. Yeah, Inflation's not a funny thing. because it's a real thing now. Man, I can't tell which hand's moving, which not. Okay, anyways. Yeah. There's nothing more real than inflation. Not even. Yeah. Not even N? No, man, I can't say it, man. But it is real. It is real. It is very real. I'm telling you. Is real, eh? I'm telling you, it's very real. Inflation is real. All right, I said that. Inflation is real. Inflation is real. We said it, समझ right? में आया? ये लोगों को समझ आना चाहिए कि जो महंगाई है, Inflation is real. वो real है. Real. सही है। Because inflation is real. Yes. समझ में आया? That's the best joke of the day. But why? Joke. The real. answer. It's not even a joke. It's real. It's real. It's real. It's real. Yeah, you're right. It is real. It is real. Anyways, the only joke. Where do you think compound interest and inflation came from? Talking of Tell interest. Is real. Is real. Everything is real. Everything these days is real. Nothing is fake. Ain't faking around What over you here, see, man. What you see is real. What you get is real. Khair, why is inflation so? Why are jokes on inflation? So there's so many jokes on inflation because demand has increased following a period of low interest. Oh, wrap that up now, man, Sabur. That is real. Wrap it up. बहरहाल हम अगले हफ्ते अच्छे कपड़े पहन के, मतलब जो फकीर जो लग रहे हैं हम, जो ये बैठे हुए हम यहाँ, जो एक ही वो व्यूअर जो है वो हमें देख रहा है बड़ी दिलचस्पी से, अगले हफ्ते में हाजिर होंगे, and we'll talk about we'll have a good outlook on what's going to happen next year on outflation, because inflation is not going to be the biggest story because is real. That's why. अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन. We'll be back next week. Same here, same time, same place. Israel. Keep it real. The Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment.